बच्चे थे, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग है। कोई साइकिल 10 दिन में चलाना सीख लेता है, किसी को 10 महीने लग जाते हैं, किसी को 4 महीने लगते हैं। बच्चा वही है, बच्चे एक ही उम्र के हैं, लेकिन अलग अलग समय पे वही चीज सीख पाते हैं। इसलिए जो मेंटर्स हमने सिस्टम बनाया, जो कमजोर बच्चे थे जिनका रिजल्ट बहुत खराब था, उनको पेरेंट्स से अंडरस्टैंडिंग के लिए थी पिछला साल, तो जो सारे पेरेंट्स को लगता है पूरे साल होता है पंक्चुअलिटी, लेट कमर्स की बहुत समस्या रहती है। खाना टिफिन प्लीज अपने हाथ से बना के दीजिए बच्चों का। सेहत, पूरा हमारा देश नीचे जा रहा है सेहत के मामले में। Grandparents are heritage and essential members of the family, as we seek values and blessings from them. So, in this category, our students are from class 2nd B, Shore. Shore from class 2nd B, Kandikar stage represent parents. Parents, please. सब बच्चे से खुश रहे, आवाज में आगे को बढ़ते रहे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं, विद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अभिभावक, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं पहली बार ही मेरा बच्चा जो बहुत है, मेरा 400 से पढ़ रहा है, इस बार ही मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है और मैंने इस वर्ष जो है अपने पोते के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जहाँ जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती दिखाई दी है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। और जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप संपर्क किया है और जो मेरी प्रॉब्लम थी, और ये मैं आप लोगों को सारे जो पेरेंट्स हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सीधे आप घर नहीं बैठना है, क्योंकि बच्चे के भविष्य के लिए सबसे पहले प्राथमिक पाठशाला परिवार होती है, जो पाठशाला होती विद्यालय है। तो अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे कह पाएंगे कि विद्यालय में भी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, हमारा बच्चा किस कैटेगरी में चल रहा है, हमें कहाँ पर जो है उसके साथ थोड़ा सहयोग करना है या उसके साथ थोड़ा करना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं और विद्यालय का सारा स्टाफ पूरी तरह से तत्पर है, ध्यान दे रहे हैं और आगे समस्त जो छात्र छात्राएं उज्जवल भविष्य के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि खुश रहें, आनंद में रहें और ऊंचाइयों से छुए। Rishabh from 2nd A, Gati 3rd A, Saksham Sharma from 3rd A, Divya parents, Sharma from 3rd A, Tanish from 3rd B, Krishna 405 days out of 206, Nishi and Meghna from 4th A, and Siddharth from 4th B. Shikshika and Siddharth from 4th B. Parents, please keep on clapping to motivate our students.
रिजल्ट है अगर 25% Negotiate Manvi from first page. Negotiate third position holder. In class first day, our third position rank goes to Yashika Singh with 97.59%. Yashika Singh with 97.59%. They secured third rank in the class. 98.74% secured second rank in the class. To be Lakshya got the first position with 98.98%. Please keep huge round of applause for our students. Now it's down for next class that is second B. Now it's with 88.38%. First position goes to Vidyan. मंत्र का उच्चारण कुछ मत कराइए, कोई बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो गायत्री मंत्र में आप मेडिटेशन करा दो, वो अपने आप में एक टॉनिक है। आपका बच्चा घर से बाहर निकल के खेलता है, टीवी स्क्रीन टाइम उसका कम कीजिए, टीवी का और फोन का। फिजिकल पे ध्यान दीजिए, कितनी बीमारियां आ रही हैं। स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ मस्तिष्क का मालिक होगा। तो ये आपसे बदलाव की जरूरत है। दूसरा, अगर आप कहीं से भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अब इतनी उम्र का cooperative parents to Karthik.